Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vrajadana Ranjana Yashoda Nandana Vrajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Vrajadana Ranjana Yashoda Nandana Vrajadana Ranjana Yashoda Nandana Vrajadana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribo, 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 Gora Haribo. Srila Prabhupada ki jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Radhika Raman Ki Jai. Shri Shri Krishna Balarama Ki Jai. Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmunitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttavadagamanam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditangscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kapatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Gaur Premanande. Okay. Is this? Oh, this is additional pastimes. Okay. Yeah, that's good. Additional pastimes. Okay. So, how shall we do this? Paragraph by paragraph? Okay. So today we are observing Ekadashi. This is Vishnu Uttana Ekadashi, I believe. How is it called? Deva. Yeah. This is a big, an especially big festival at Sri Rangam, I believe.
तो आज हम एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं और आज देव उत्थान एकादशी है और विशेषकर श्री रंगम में आज एक बहुत भव्य उत्सव होता है. This is the day, I believe, they open this one door called the Vaikuntha door. आज के दिन वहाँ पर वैकुंठ द्वार खोले जाते हैं. It's only one day in the year they open this door. साल में एक ही दिन होता है जब ये द्वार खोलते हैं, वो आज का दिन है. So many devotees, they come because it's said if you pass through that door on that day, then guaranteed back home, back to God. तो ऐसा माना जाता है अगर आज के दिन कोई उस द्वार को पार कर ले तो उसका सुनिश्चित है वापस भगवत धाम जाना. तो अनेक भक्तगण वहाँ पर जाते हैं आज के दिन. So Sri Rangam is a little far away from us geographically, but we can meditate that we are there taking this opportunity. तो श्री रंगम हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है दूरी में, परंतु हम आंतरिक रूप से मनन कर सकते हैं कि हम वहाँ पर हैं. Now you might say, oh, but we are not really interested in Vaikuntha, we are interested in Goloka. तो आप में से कुछ कह सकते हैं कि अरे हम वास्तव में वैकुंठ में रुचि नहीं रखते, हम तो गोलोक जाना चाहते हैं. So no need for going through Vaikuntha door. तो इसलिए वैकुंठ द्वार के वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है. Well, I am thinking of how Srila Bhaktivinoda Thakur refers sometimes that Goloka is within the spiritual sky known as Vaikuntha, so it's inclusive. और मैं सोच रहा हूँ कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अक्सर इस प्रकार वर्णन करते थे कि जो गोलोक वृंदावन है वो आध्यात्मिक आकाश के अंतर है, तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत हैं. In any case, Ekadashi Titi ki jai. And today we are observing the Tirobhav Titi of His Divine Grace, Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. और आज के दिन ही हम तिरुभाव दिवस मना रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति परम पूजनीय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का. It is understood he is the Guru, spiritual master of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is the spiritual master of our Srila Prabhupada. वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरुदेव थे और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव हैं. And one, I think, interesting point here is that Srila Bhakti Siddhanta Thakur was highly educated. और यहाँ पर एक रुचिकर बात यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही प्रखान पंडित थे. Even you may be native English speaker, as I am. You read some of the English writings of Bhakti Siddhanta Thakur. Very difficult to follow. ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए मातृभाषा अंग्रेजी है, जैसे कि मैं स्वयं हूँ, अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के द्वारा लिखित लेख पढ़ेंगे तो भी आपको कठिनाई होगी समझने में. But Srila Gaur-Kishore Das Babaji, it said, was illiterate. और श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को बताया जाता है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. And yet Srila Bhakti Siddhanta Thakur took full shelter of him as his spiritual master. और फिर भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूर्ण शरणागति प्राप्त की श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में. Because he understood that spiritual realization has nothing to do with worldly learning. क्योंकि वो पूरी तरह से उनको साक्षात्कार था कि आध्यात्मिक अनुभूतियों का इस भौतिक जगत की विद्या से कुछ भी लेना देना नहीं है. Srila Gaur-Kishore Das Babaji was a good friend of
Srila Bhaktivinoda Thakur, who was the father of Bhaktisiddhanta Thakur. श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर में बहुत अच्छी मित्रता थी। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी हैं। So although we see him on the altar, the series of pictures sequentially, in one sense they go together, Gaur Kishore and Bhaktivinoda Thakur. तो हालांकि हम ऑल्टर में जो गुरु परंपरा के चित्र लगे हुए हैं उसको परंपरा के रूप में देखते हैं, परंतु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर ये साथ के ही हैं। Srila Bhaktivinoda Thakur was certainly not the Diksha Guru of Gaur Kishore Das Babaji. श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु नहीं थे। Rather, they were friends. They spent a lot of time together. Gaur Kishore used to like to come and spend time discussing krishna-ksetra with Srila Bhaktivinoda Thakur. परंतु वो बहुत गहरे मित्र थे और काफी समय व्यतीत करते थे साथ में कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अक्सर भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास आकर कृष्ण कथा की चर्चा करते थे। I sometimes wonder what these earlier acharyas would say on seeing the Krishna consciousness movement today. मैं अक्सर ये मनन करता हूँ कि जो पूर्व काल में जो आचार्य हैं वो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को देखें तो उनका क्या राय होगा। On one side, I think they would be quite amazed. एक तरफ वो बहुत आश्चर्यचकित होंगे। On the other side, I think maybe some things they would see that we do, they would be laughing. और दूसरी तरफ जो कई चीजें हम करते हैं उसको देख के वो बहुत जोर से हंसते होंगे। But that's another subject. परंतु ये एक अन्य विषय है। So today we are reading from Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta. This is compiled, this is written by His Holiness Satsvarup Das Goswami. तो आज हम श्रीला प्रभुपाद लीलामृत से पाठ कर रहे हैं जिसका लेखक हैं श्रीला सत्स्वरूप दास गोस्वामी। And I might mention that Satsvarup Das Goswami is a extremely prolific writer. और श्रीला सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बहुत ही निपुण दक्ष लेखक हैं। He continues to write to the present day. He must be well in his 80s by now. उनकी आयु अभी 80 में होगी और वो आज वर्तमान में भी अपने लेखन कार्य जारी किए हुए हैं। The number of books he's written it's well over 100, I believe. 100 से ज़्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। And many of his books are very self-reflective. They are like journals. He's writing for the world, but he's writing also for himself. और बहुत सारे उनके जो पुस्तकें हैं वो आत्मलोकन करते हुए हैं। हालांकि वो संसार के लिए लिख रहे हैं परंतु साथ ही साथ आत्मलोकन भी कर रहे हैं। With the intention of developing his Krishna consciousness. अपनी कृष्ण भावनामृत के विकास के उद्देश्य से वो लिख रहे हैं। So it's quite fascinating to read some of his writings where he's doing this self-reflecting. और बहुत ही अक्सर हैरत अंगेज करने वाला अनुभव होता है उनका जो लेखन कार्य को अगर कोई पढ़े तो। So one of his many writing accomplishments was to write this biography of Srila Prabhupada, which originally was in was it 5 or 6 volumes? और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने हमें श्रीला प्रभुपाद के जीवन के ऊपर ये पूरी जीवनी प्रस्तुत की। जब शुरू में आई थी लगभग 5 या 6 वॉल्यूम में थी। Then the BBT has republished in 2 in English in 2 very thick volumes, I think.
उसके बाद भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट ने इसका दोबारा प्रकाशन किया 2 बड़ी वॉल्यूम्स के रूप में, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी. Yeah. Okay, let's read. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. So this is, where are we here? We are in San Francisco? तो अभी हम सैन फ्रांसिस्को में हैं. Yes, looks like we're in San Francisco. देखने से लगता है कि हम सैन फ्रांसिस्को. This chapter is called Return to America. इस अध्याय का शीर्षक है अमेरिका में वापसी. Excuse me. Prabhupada thought of assembling the lectures into a small book. Indian gurus introduced self-styled techniques. Were increasingly popular in the US. Therefore, Prabhupada wanted to distinguish the standard form of yoga and meditation as taught by Lord Krishna in the Bhagavad Gita from the farce taught by gurus who never mention Krishna as the Supreme Personality of Godhead, but rather say everyone is equal to God, and whose disciples are allowed to indulge their senses in intoxication and illicit sex. They give a mantra for a fee, Prabhupada noted, and claim that by meditating 20 minutes in the morning, you can become God in 6 months. He was surprised that American people, who were supposedly intelligent, were being so easily cheated. Quote, "We have actually seen such so-called yogis," Prabhupada said, "sleeping and snoring while meditating." प्रभुपाद ने इन व्याख्यानों को एक लघु पुस्तिका के रूप में संकलित करना चाहा. संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शैली का सूत्रपात करने वाले भारतीय गुरु अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे थे. अतः श्रीला प्रभुपाद ने योग तथा ध्यान के मानक रूप जैसे कि कृष्ण ने भगवत गीता में शिक्षा दी है, उसका भेद उन गुरुओं द्वारा दी गई हास्यपद शिक्षा से करना चाहा, जो कभी भी कृष्ण का उल्लेख भगवान के रूप में ना करके ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ईश्वर के समान है, और जिनके शिष्यों को नशा तथा अवैध यौन में लिप्त रहने की अनुमति दी जाती है. प्रभुपाद ने पाया कि वे शुल्क लेकर कोई मंत्र देते हैं और दावा करते हैं कि प्रातःकाल 20 मिनट का ध्यान करके तुम 6 महीने में ईश्वर बन सकते हो. उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि बुद्धिमान माने जाने वाले अमेरिकी लोग इतनी आसानी से ठगे जा रहे हैं. प्रभुपाद ने कहा कि हमने तथाकथित योगियों को ध्यान करते समय सोते और खराटे मारते देखा है. So this sense of disappointment that Prabhupada had in many so-called transcendentalists, spiritualists, yogis, etc., began very early in his life. और उनको देखकर एक जो निराशा का भाव श्रीला प्रभुपाद में था, यहाँ तथाकथित अध्यात्मवादियों और योगियों को देखकर उन प्रभुपाद के जीवन की शुरुआत से ही. When, as a child, he would see his father would invite all sorts of sadhus or quasi-sadhus. He would host them at their home. And Prabhupada, the young Abhay Charan, could see what kind of sadhus are these. तो बचपन में ही जब वो देखते थे उनके पिताजी अपने घर पर अलग अलग प्रकार के साधुओं को निमंत्रण देकर भोजन कराते हैं, तो उस समय जो युवा प्रभुपाद जो अभय चरण थे तब, तो देख के उनको बड़ा निराशा होता था, ये किस प्रकार के साधु हैं. And now it's mentioned here, he's surprised. He says, "I thought Americans are supposed to be intelligent." और यहाँ पर वो बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि उन्हें लगा कि अमेरिकी लोग तो बुद्धिमान माने जाने वाले लोग हैं, But they are also being cheated परंतु यहाँ इतनी आसानी से ठगे जा रहे हैं by these cheap gurus who are promising, you just chant this mantra and you become God. यहाँ धोखा देने वाले गुरुओं के द्वारा जो इस प्रकार का दावा है, वादा कर रहे हैं कि तुम ये मंत्र लो और कुछ समय में तुम भी भगवान बन जाओगे. Service begins by the tongue, Prabhupada said in one of his December 67 lectures. By chanting this Hare Krishna and by the taste of Krishna prasadam. The beginning process is very nice. If prasadam is offered to you, accept it. If you become submissive and give service,
By these two practices, Krishna will reveal himself to you, just like Krishna is revealing himself to Arjuna. Arjuna is a devotee, he is a friend. Quote, I am speaking to you that old system of yoga, bhakti yoga. Unquote. Only one who has developed the service spirit with love and devotion, he can understand Krishna. प्रभुपाद ने अपने दिसंबर 1967 के एक व्याख्यान में कहा, जीभ से इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लेने से ही सेवा शुरू होती है। प्रारंभिक विधि अति उत्तम है। यदि आपको प्रसाद दिया जाता है तो आप इसे स्वीकार करें। यदि आप इन दोनों अभ्यासों से विनीत बन जाते हैं और सेवा करते हैं तो कृष्ण आपके समक्ष उसी तरह प्रकट होंगे जिस तरह वे अर्जुन के समक्ष प्रकट होते हैं। अर्जुन एक भक्त हैं, वे उनके मित्र हैं। मैं तुम्हें योग की पुरानी विधि भक्ति योग बता रहा हूँ। जिसने प्रेम तथा लगन से सेवा भाव विकसित कर लिया है वही कृष्ण को समझ सकता है। So, in contrast to the so-called gurus who were promising that you chant this mantra, you become God, Srila Prabhupada was promising, you chant this mantra, you take this prasadam, and you will see God. You will have direct darshan of God. तो इन तथाकथित गुरु के विपरीत जो तथाकथित गुरु वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि तुम ये मंत्र लो और तुम भगवान बन जाओगे, श्रीला प्रभुपाद का दावा था तुम इस मंत्र को जप करो, इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुम वह योग्यता प्राप्त करोगे कि तुम भगवान का साक्षात दर्शन कर पाओ। But more specifically, not just Bhagavan, but Lord Shri Krishna. और विशेष रूप से न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाओगे। Early in Prabhupada's being in America, he met this, at the time, quite famous poet named Allen Ginsberg. श्रीला प्रभुपाद ने शुरुआती दिनों में उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि से मिले, एलन गिन्सबर्ग। Allen Ginsberg was a very radical kind of person. He was kind of a leader of this new hippie movement. और एलन गिन्सबर्ग हिप्पी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे और बहुत ही हेर फेर बदलने वाले बहुत ही बड़े कट्टर लीडर के रूप में देखे जाते थे। How do you say hippie? Radical. So, but Allen Ginsberg, he appreciated Srila Prabhupada. तो एलन गिन्सबर्ग बहुत प्रशंसा करते थे श्रीला प्रभुपाद की। And he had been to India. He spent some time in Benares, I think. वो पहले भारत की यात्रा कर चुके थे, उन्होंने कुछ समय बनारस में बिताया था। Probably mostly in a state of intoxication, but aside from that. और शायद बहुत ही नशे की हालत में बिताया था समय। He appreciated Prabhupada, but he wanted to encourage him. So one day they were talking, and Allen Ginsberg said, Swamiji, may I humbly make one suggestion? तो एलन गिन्सबर्ग श्रीला प्रभुपाद की बहुत सराहना करते थे और एक दिन जब उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने प्रभुपाद के समक्ष ये बात रखी कि स्वामी जी मैं आपको क्या एक सुझाव दे सकता हूँ? If you could just change the name of your society, instead of International Society for Krishna Consciousness, just make it International Society for God Consciousness. तो उन्होंने कहा अगर आप अपने जो ये समाज है इसका अगर नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत समाज की जगह अंतर्राष्ट्रीय भगवत समाज रख लो। अंतर्राष्ट्रीय भागवत समाज. And we all know what Prabhupada thought about that. और हम सब जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया। No, that's not my mission. My mission is to present Krishna, the Supreme Personality of God. तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन है कृष्ण को प्रस्तुत करना, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। After the lecture, Prabhupada would continue the theme Krishna consciousness in his room.
It was the same theme as on his morning walks, in his letters, or in his intimate talks with individual disciples or visitors. It was the theme of his writing and the very heartbeat of his life. When a devotee asked Prabhupada how the soul is carried from body to body, Prabhupada replied, by desire, and cited himself as an example. Quote, just like I have come to America. Why? Because I wanted to preach. So, by that desire, I was carried here. Otherwise, I have no business to come here. व्याख्यान देने के बाद भी श्रीला प्रभुपाद अपने कमरे में कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते रहते हैं। ये विषय वही था जो प्रातःकालीन भ्रमण में, उनके पत्रों में या अलग अलग शिष्यों के साथ घनिष्ठ वार्तालाप में या मिलने वालों के साथ होता। यही विषय वस्तु उनके लेखन में और उनके हृदय स्पंदन में भी होती। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह ले जाया जाता है? तो प्रभुपाद का उत्तर था, इच्छा द्वारा। और उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया, जिस तरह कि मैं अमेरिका आया हूं क्योंकि मैं प्रचार करना चाहता था, अतः उस इच्छा के द्वारा मैं अमेरिका लाया गया, अन्यथा यहां पर मेरे आने का कोई प्रयोजन नहीं था। इच्छा द्वारा। Yes. Prabhupada was always ready with an example, an analogy to illustrate some point. श्रीला प्रभुपाद हमेशा तैयार रहते थे एक किसी उदाहरण, किसी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए अपने जो दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। And here he's being especially graphic by giving himself as example. और यहाँ पर बहुत ही विस्तार से उन्होंने विवरण दिया अपने जीवन का उदाहरण देकर। Okay, now we hear from Chidananda. He says, there would be 3, 4, or 5 devotees in his room, and he would just start talking. They would somehow gather in his room, and he would start talking about what he was trying to do. His talk was not directed specifically to anyone, but he was saying that this is what he was doing. He made everything very clear. He wanted to publish his books. He was trying to get a press for his back, for this. He was trying to get a press for this back in New York. And if he had a letter from Rai Ram in New York, he would read the letter right there. In this way, it was allaying any doubts in people's mind about what he was really going to try to do. He had his books and the temple. He was concerned about the temple and the new lunch program where we were giving out free prasadam. His concern kept everybody going. Before he came, there wasn't that much activity, but when Prabhupada came, things started bustling very fast. अब हम चिदानंद के से सुनेंगे, वो व्याख्यान कर रहे हैं। उनके कमरे में 3, 4 या 5 भक्त होते और वे उनसे बात करना शुरू कर देते। वे किसी तरह से उनके कमरे में एकत्रित होते और प्रभुपाद उन्हें बताना शुरू कर देते कि वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात किसी एक को लक्ष्य करके नहीं होती थी, किंतु वे वही कहते जो कुछ वे कर रहे थे। वे हर बात को अति स्पष्ट कर देते। वे अपनी पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते थे। वे इस कार्य के लिए न्यूयॉर्क में एक छापखाना प्राप्त करने के प्रयास में थे। यदि उन्हें न्यूयॉर्क के राय राम से पत्र प्राप्त होता था तो वह उसे तुरंत सबों के समक्ष पढ़ देते थे। इस तरह लोगों के मनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था कि वे वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। उनके पास उनकी पुस्तकें तथा मंदिर थे। वह मंदिर को और दोपहर के भोजन के नवीन कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे, जिसमें लोगों को मुफ्त प्रसाद दिया जाता था। उनकी चिंता से हर कोई कार्य पर लगा रहता था। उनके आने के पूर्व इतनी अधिक सरगर्मी नहीं थी, किंतु जब श्रीला प्रभुपाद आ गए तो सारे कार्य तेजी से होने लगे। So we have to try to imagine this time before the Hare Krishna movement was really moving. it was in its seed stage. तो हमें इस समय को में जाना पड़ेगा जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत तेजी से चलने से पूर्व की बात है, जब ये बिल्कुल अंकुरित अवस्था में थी। Or maybe it would be more accurate to say
sprout. There was a sprout coming up. और उस समय बिल्कुल अंकुरित हो रही थी. Yeah. So Prabhupada was there with his little sprout of the Hare Krishna movement, and he's carefully watering. He's wants it to come up and become a nice tree. और श्रीला प्रभुपाद उस समय जो छोटे से अंकुरित हो रहा था उन लोगों के साथ थे और बहुत ही सावधानी से उसमें जल दे रहे थे. And as it's mentioned here, as soon as Prabhupada came to San Francisco, because there was already a small movement started there by Mukunda Goswami now. But then Prabhupada came, and then so much started happening. और जैसे यहाँ पर वर्णन है कि उस समय लॉस एंजलिस में मुकुंद जी के द्वारा वो आंदोलन शुरू किया गया था और चीजें किसी न किसी रफ्तार से हो रही थी, परंतु जब प्रभुपाद वहां पर पहुंचे तो चीजों ने रफ्तार को बहुत ज्यादा पकड़ लिया. And I can say from personal experience, this was always the situation. When Prabhupada was present, the atmosphere I can only describe as constantly electric. और मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बता सकता हूँ कि ये हर जगह का अनुभव होता था. जब श्रीला प्रभुपाद वहाँ वर्तमान रूप में वहाँ पर रहते तो पूरा का पूरा जो वातावरण है निरंतर रूप से इलेक्ट्रिक होता था. Electric. Yes. When I first met Srila Prabhupada, it was in Paris, 1972. मैं सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद से पेरिस में मिला 1972 में. And the arrangements for the devotees were completely makeshift. और जो भक्तों ने प्रबंध किया उस स्थान का हुलिया ही बदल दिया. How do you say makeshift? हुलिया बदल दिया वहाँ का. Yeah, whatever. But it was so intense. Prabhupada was present. You couldn't sleep as Prabhupada was present. और इतना इंटेंस अनुभव होता था कि प्रभुपाद वहाँ होते थे तो ऐसा नहीं है कि आप आराम से सो पाओगे वहाँ. You didn't want to sleep. और आपकी सोने की इच्छा भी नहीं होगी. So it was always like that. ये हमेशा ऐसा होता था. One night in his room on Willard Street, Prabhupada was talking about seeing Krishna. Quote, "Don't try to see him," Prabhupada said, "but act in such a way that he will come and see you." Surdas was a blind man, yet due to his sincere chanting, "Oh Krishna, Krishna, Krishna," Krishna came to see him. So Krishna is there whether we see him or not. All we must do is become sincere, and he will present himself whether we see him or not. Krishna hugs the cow. What does a cow know? He is a dumb animal. Is the cow as great as Arjuna? No. Yet, due to the cow's sincerity to come and lick Krishna's body, Krishna says, "Oh yes, my dear cow, come, and I shall take care of you." And Krishna gives him some sweet nectar. So, we should want Krishna to come and see us, not that you should want to see Krishna. एक रात श्रीला प्रभुपाद विलाट स्ट्रीट स्थित अपने कमरे में कृष्ण का दर्शन करने के विषय में बात कर रहे थे. प्रभुपाद ने कहा, उनका दर्शन करना का प्रयास मत करो, बल्कि इस तरह से कर्म करो कि वे स्वयं आकर तुमसे मिलें. सूरदास अंधे थे, फिर भी अपने निष्ठावान जप से हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आए. अतः कृष्ण सर्वत्र हैं. हम चाहे उन्हें देखें या न देखें, हमें यही करना होगा कि हम निष्ठावान बने और तब वे स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, चाहे हम उन्हें देखें या नहीं. कृष्ण गौवों को प्यार करते हैं. क्या गौवें जानती हैं? गाय तो गूंगा पशु है. क्या गाय अर्जुन के तुल्य महान है? नहीं. फिर भी गाय आकर कृष्ण का शरीर चाटती है. अतः उसकी निष्ठा देखकर कृष्ण कहते हैं, मेरी गाय आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. और कृष्ण उसे कुछ मधुर अमृत देते हैं. अतः हमें इच्छा करनी चाहिए कि कृष्ण आकर हमसे मिलें, ये नहीं कि हम कृष्ण को मिलने की इच्छा करें. Here, Srila Prabhupada is repeating
a major theme, a major lesson that was being taught again and again by his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Thakur. यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद इस एक बहुत ही मुख्य दार्शनिक विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं जो पुनः बारंबार उनके गुरु श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के द्वारा सिखाया गया. This is like a trademark teaching of Bhaktisiddhanta Thakur. Don't try to see Krishna, serve Krishna, and Krishna will see you. और उनका एक बहुत ही मुख्य शिक्षाओं में से एक ये है कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, परंतु इस प्रकार से कार्यरत रहो, इस प्रकार से सेवा करो कि कृष्ण आपको देखने चाहें. Some years ago I was in Vrindavan. I was there for a bit longer, some months. Actually I was doing research on the Radharaman temple. महाराज बता रहे हैं कुछ साल पहले मैं वृंदावन में था और कई महीनों के लिए था. उस समय मैं रिसर्च कर रहा था राधा रमन मंदिर पे. And there was one worker to repair something in the flat where I was staying. और वहाँ पर एक वर्कर था जहाँ पे महाराज रह रहे थे, जो उनका निवास स्थान था, उसमें कुछ रिपेयर करने के लिए. And he was a Brijvasi. वो ब्रिजवासी था. And at one point, just from kind of nowhere, he asked me in a slightly challenging way, "So, you have seen Krishna?" और एक समय पर उसने मेरे को अचानक से थोड़ा बहुत चुनौती भरा प्रश्न पूछा, तो क्या आपने कृष्ण को देख लिया है? And I was thinking, this is not our understanding. This is not what we are looking for. तो मैं ये विचार कर रहा था कि ये हमारी समझ नहीं है, हमारा सिद्धांत नहीं है. In any case, we were sort of in two different worlds together in Vrindavan. I thought it was ironic, and he was basically claiming, suggesting that he has seen Krishna. तो हम बिल्कुल ऐसा था कि दो अलग अलग संसार से उसी एक कमरे में उस समय थे, जो मुझे बहुत ही विचित्र बात लगी. उसका झुकाव था, वो इस प्रकार से चीजें प्रस्तुत कर रहा था कि वो कृष्ण को देख चुका है. And who can say? Maybe और कौन कह सकता है, शायद वो असली में दर्शन कर चुका है. At that time, few devotees were very well read in Prabhupada's books. They didn't know the vastness of the philosophy. Only a few books were published. And so Prabhupada in person was the real source of Krishna consciousness knowledge. उस समय कुछ भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों का भली भांति अध्ययन कर चुके थे, किंतु वे दर्शन की विशालता को नहीं जानते थे. केवल कुछ ही पुस्तकें प्रकाशित थी. अतः श्रीला प्रभुपाद स्वयं ही कृष्ण भावना भावित ज्ञान के असली स्रोत थे. When I first came to the temple in Germany, we had two books. We had Bhagavad Gita and Sri Ishopanishad. महाराज बता रहे, जब मैं पहली बार मंदिर गया था तो उस समय सिर्फ दो ही पुस्तकें थी, श्रीमद् भगवद गीता और श्री ईशोपनिषद. And sometime after that, we received a new English book. It was called Lord Chaitanya in 5 Features. और थोड़े दिनों बाद हमें एक नई पुस्तक मिली जो अंग्रेजी भाषा में थी, श्री चैतन्य महाप्रभु 5 तत्वों में. You know this book? Yes. Srila Prabhupada was in process of translating Sri Chaitanya Charitamrita, and he translated Adi Leela chapter 7, and he told his disciples, "You print this one chapter as a book." तब श्रीला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कर रहे थे. उन्होंने आदि लीला का अनुवाद किया था, और आदि लीला में जो अध्याय 7 है, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि इस अध्याय को एक अलग पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करो. And we received that book and we were reading it and we became so excited because of that book. तो हमें वो पुस्तक प्राप्त हुई और हम उसको पढ़ रहे थे, और उसके फलस्वरूप हम इतने उत्साहित हो गए थे.
because it's in that chapter that Krishnadas Kaviraj is describing how the Panchatattva have plundered the storehouse of love of God and they are distributing it freely. क्योंकि ये वही अध्याय है जिसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये व्याख्यान कर रहे हैं कि किस प्रकार से पंच तत्व ने जहाँ पर कृष्ण प्रेम का जो भंडारा है उसको लूट लिया है और मुफ्त में सबको वितरण कर रहे हैं. So we got so excited. Yes, this is what we want to do also. और हम सब इतने उत्साहित हो गए थे कि हाँ हमें भी ये करना है. 18-year-old Kim used to have philosophical arguments with his atheistic father and then invariably have questions for Prabhupada at the end of the lectures. He would ask so consistently that Prabhupada would turn to him and say, "Are there any questions?" Given a good question, Prabhupada might launch into another impromptu lecture. 18 वर्षीय किम अपने नास्तिक पिता से दार्शनिक तर्क वितर्क करता था और प्रभुपाद के व्याख्यानों के बाद अवश्य ही प्रश्न पूछता. मैं निरंतर प्रश्न पूछता, इसलिए प्रभुपाद उसकी ओर मुड़कर कहते, क्या कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा प्रश्न होने पर प्रभुपाद उसी से अन्य व्याख्यान शुरू कर देते थे. I had one experience. I had one opportunity to ask Srila Prabhupada a question. मेरा एक अनुभव है, मेरे पास एक अवसर था जिसमें मैंने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा. It was in the summer of 1974. Srila Prabhupada came to Germany. 1974 की गर्मी में श्रील प्रभुपाद जर्मनी आए. And one evening he gave Bhagavad Gita class in the temple room. और एक शाम में उन्होंने मंदिर कक्ष में भगवद गीता कक्षा दी. And the verse that he was speaking on was chapter 2, verse 14. और वो भगवद गीता के अध्याय दूसरे का 14वां जो श्लोक है उस पर कक्षा दे रहे थे. What is verse? Matra sparshasta kaunteya agama tams titikshasva bhagavata. So Srila Prabhupada in his lecture was very much emphasizing titikshasva, you must tolerate. और श्रीला प्रभुपाद इस शब्द पर बहुत बल दे रहे थे, तितिक्षस्वा, तुम्हें निश्चित रूप से सहन करना है. And he was speaking so powerfully. I was moved. और वो इतने शक्तिशाली रूप से बोल रहे थे और मेरे को इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ. And then he ended his class and then he invited questions. तब उन्होंने कक्षा समापन की और प्रश्न के लिए निमंत्रण दिया. And I thought now or never. और मैंने सोचा अभी या कभी नहीं. This is my chance. This may be the only chance. Now I have to ask a question. ये मेरा एकमात्र अवसर हो सकता है, मुझे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछना है. So I asked the question, how to give up material desire. तो मैंने प्रश्न पूछा, भौतिक इच्छाओं को कैसे त्याग सकते हैं. Srila Prabhupada seems to like the question because he, like it's mentioned here, he gave quite a long answer. तो मुझे ऐसा लगा श्रीला प्रभुपाद को प्रश्न पसंद आया, जैसे यहाँ पर वर्णन है, उन्होंने काफी विस्तार में इसका उत्तर दिया. Do you want to hear what he said? क्या आप सुनना चाहते हैं उनका क्या उत्तर था? First he said, no desire. पहला उनका उत्तर था, कोई इच्छा नहीं. Desire only for Krishna. सिर्फ कृष्ण के लिए इच्छा करो. And then he quoted Anya Bilashita Shunyam और फिर उन्होंने उद्धृत किया Lilamrita Anukulyena Krishna-ksetra Bhaktiruttama. और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने श्लोक को उद्धृत किया, अन्यभिलाषिता शून्य. And he explained the verse. और उन्होंने इस श्लोक को समझाया about engaging everything in Krishna's service. किस प्रकार से सर्वस्व कृष्ण की सेवा में उपयुक्त किया जाना चाहिए.
And then he summarized by giving examples of how you can serve Krishna. और उन्होंने फिर अंत में इसको संक्षिप्त में बताया कि कैसे सबको कृष्ण की सेवा में उपयुक्त कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से उदाहरण दिए. He said, you can cook for Krishna. आप कृष्ण के लिए भोग बना सकते हो. You can clean Krishna's temple for Krishna. कृष्ण मंदिर को साफ कर सकते हो कृष्ण के आनंद के लिए. You can distribute books for Krishna. He gave a few examples. आप कृष्ण के लिए पुस्तक वितरण कर सकते हो. उन्होंने कई उदाहरण दिए. So it was like a list of different sorts of ways you could serve Krishna. तो एक प्रकार से पूरी लिस्ट थी, अलग अलग रूप से आप कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हो. In this way he was answering my question, how to give up material desire. No desire, desire only for Krishna, serve Krishna. तो इस प्रकार से वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा कैसे की जा सकती है और उसके अलग अलग उदाहरण. And the very last example that he gave for how you might serve Krishna, और सबसे अंतिम उदाहरण जो उन्होंने दिया कि आप किस प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकते हो. he said, you can drive a car for Krishna. आप कार चला सकते हो कृष्ण के लिए. Now this is significant for me personally because this was my main service at that time. तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय ये मेरी मुख्य सेवा थी मंदिर में. It was to have a driver's license at that time for the devotees was not so common. I had a driver's license, so they said, "You have to be our driver." Okay, drive to the fruit market and drive the garbage away and drive here and there. That was my service. तो उस समय भक्तों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कोई आम बात नहीं थी. मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए मुझे ये सेवा दी गई कि तुम कार चलाओगे. तो मैं अक्सर फ्रूट मार्केट जाता था, कहीं कूड़ा फेंकने जाता था, ऐसे अलग अलग जगह मेरे को ड्राइव करके जाना होता. ये मेरी सेवा थी. Now here's the thing. There's no doubt in my mind that there would have been any reason for any devotee present to have directly informed Srila Prabhupada that this brahmachari over here, he is the driver for the temple. There's no reason for that. तो मेरे को पूरा विश्वास है कि किसी वहाँ पे उपस्थित भक्तों के पास कोई कारण नहीं था, किसी ने नहीं बताया था कि ये जो ब्रह्मचारी है इसकी सेवा कार चलाना है. Why would there was no reason to give एक that भी ऐसा कारण नहीं था कि information. किसी भक्त को जाके बताना पड़े प्रभुपाद जी को. And yet Srila Prabhupada seemed to know. और फिर भी ऐसा लगता था शिला प्रभुपाद को ज्ञात है. So when he said, "You can drive a car for Krishna," all the devotees laughed because they knew that I was the temple driver. और तब जब शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम कृष्ण के लिए कार चला सकते हो, तो वहाँ पे उपस्थित सभी भक्त बहुत जोर से हंस पड़े क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी सेवा कार चलाना है. Hare Krishna. Shall we stop here? Yeah, if there are any comments or reflections. Hare Krishna, Maharaj, thank you. Like this incident came off like when Allen Ginsberg told Prabhupada that you should rename the society, International Society for Krishna Consciousness. You should name like God Consciousness. But it was just like when thought came that like there was a scope or option like if it was given or that at that time also in Prabhupada time that the ISKCON International Society for Krishna Consciousness was like continuing, but simultaneously he could have got another branch where just like some secular preaching and just God consciousness could have gone that way also. So would Prabhupada have like approved for that at that time of this thing? तो जैसे एलन गिन्सबर्ग के साथ प्रभुपाद का वार्तालाप हुआ
कि आपने बताया कृष्ण भावनामृत समाज इसका नाम रखा, अगर वो भगवत समाज इसका नाम रखते तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था प्रभुपाद एक और ब्रांच खोलते अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, और एक सेकुलर प्रीचिंग के रूप में या सेकुलर प्रीचिंग के मॉडल के रूप में उससे प्रचार और ज़्यादा होता? This option was just not in view. For all the devotees, Srila Prabhupada was everything. वहाँ पर जितने भक्त थे उनके लिए श्रीला प्रभुपाद सब कुछ थे. So he was the only guru. I mean, of course, there were all these other sorts of gurus, or yogis, but anyone in connection with Prabhupada, he was the guru. तो वो एकमात्र वहाँ पर गुरु थे. निश्चित रूप से वहाँ अलग अलग योगी जन और अलग अलग और संस्थाओं के गुरु थे, परंतु भक्तों के लिए सिर्फ श्रीला प्रभुपाद गुरु थे उस समय. And the desire was to please him. और इच्छा थी उनको कैसे प्रसन्न किया जाए. So when he said, no, we want International Society for Krishna Consciousness, there was no thought of, well, let's maybe have both. It never came to mind to anyone. तो जब प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनामृत समाज नाम रखेंगे, तो ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आया कि शायद भगवत समाज रखें और एक दूसरे रूप से प्रचार करें. So it's a little bit hypothetical. What if? तो ये प्रश्न थोड़ा hypothetical है. But if it would be, then I would picture Srila Prabhupada saying, anyway, they can do what they want, but we are preaching Krishna consciousness. तो मैं इस ऐसे कल्पना करता हूँ, अगर ऐसा होता भी तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं वो जैसे प्रचार कर रहे हैं उनको करने दो, परंतु हमारा मुख्य वो है कृष्ण भावनामृत. And he never thought of it in sectarian terms. सेक्टेरियन को हिंदी में क्या कहते हैं? उन्होंने इसको एक गुटबाजी के रूप में नहीं देखा. And he was so many times making that clear that he was not thinking in sectarian terms. Anyone, he would sometimes speak of God consciousness. When speaking about other religious traditions, then he would say, the test of religion is whether you are developing your love of God, and he would use the word God. तो जब भी वो अन्य धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होते तो वह भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बताते किसी भी धर्म की परीक्षा क्या है कि भगवान के प्रति कितना प्रेम आपने विकसित किया है. Yeah. Thank you, Maharaj. Actually, Shukva Prabhu's question spurred that question I intended to ask. We see because you were discussing, even Lilamrita was saying, Prabhupada's mood generally, while preaching, would be very combative in a way many times. And post Prabhupada's physical presence, now we see it's more accommodative in the sense, or I would say there's a more cooperative mood developing in ISKCON to cooperate with other religious organizations. Interfaith dialogues is part of one thing. And also another kind of settling with the mainstream Hinduism. So how do you see that? Where are we at exactly? Because you have that privilege to actually. It's always this sort of question that comes at this time. You can have a whole seminar on this subject. तो हम जिस प्रकार से अनुभव करते हैं श्रीला प्रभुपाद का जो पूरा भाव था एक बिल्कुल युद्ध की तरह जब जैसे जाते थे, बहुत ही कॉम्बेटिव भाव होता था प्रचार करने का. परंतु समय के साथ हम देखते हैं कि जो पूरा भाव है प्रचार करने का इस प्रकार से है कि सभी को साथ में लेके चलना है और बिल्कुल
ऐसे कॉम्बेटिव वाली स्पिरिट नहीं है, और जो मुख्य मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है उसके साथ सेटल होना है। यही प्रश्न है। Yeah, so one way to understand it is that Srila Prabhupada, as the pioneer of his movement, especially outside of India, was appropriately combative. He was a fighter. He was, he was as he was. इस आंदोलन के संस्थापक के रूप में अगर हम देखें, विशेषकर भारत से बाहर जो श्रीला प्रभुपाद का पूरा मूड था, जैसा आपने बताया, एक योद्धा के रूप में, तो वैसा भाव था और ऐसा ही श्रीला प्रभुपाद है। And now, as you mentioned, we may be having a bit different style in our presentation. और अभी जैसे आपने व्याख्यान किया, हमारे प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो अलग हो सकता है। And sometimes there's an anxiety that this may be manifesting, showing what is sometimes called mission drift. और ये इस चिंता को भी व्यक्त करता है, कभी हमें ये चिंता हो सकती है कि जो पूरा का पूरा मिशन है वो एक अलग दिशा में जा रहा है। One reason I believe that we don't have to worry about that is, number one, we have all the books of Srila Prabhupada. तो मुझे लगता है कि एक कारण कि इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास श्रीला प्रभुपाद की सारी पुस्तकें हैं। Number two, we have the personal memories of, I don't know how many hundreds of devotees who were with Srila Prabhupada in the form of these interviews, Prabhupada memories. और अनेक अनेक भक्तों के जो शिष्य श्रीला प्रभुपाद के, उनके व्यक्तिगत जो अनुभव है, उनकी स्मृतियाँ प्रभुपाद को लेके वो रिकॉर्डेड रूप में है। We have how many letters? 6,000, I think. तो 6800 पत्र हैं श्रीला प्रभुपाद के लिखे हुए। We have the more than 2,000 lectures recorded and transcribed. 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो श्रीला प्रभुपाद के रिकॉर्डेड हैं और उनको लिखित रूप में भी हैं। And we also have, I heard recently already, 53 books in English language written by disciples of Prabhupada, remembering his person and in different ways describing. और वर्तमान में कम से कम 53 पुस्तकें हैं श्रीला प्रभुपाद के जीवन के ऊपर, जो उनके अलग अलग शिष्यों ने लिखे हैं अपने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए। So compare that to, let's say, the legacy, the written legacy and memory of the Christian tradition of Jesus. Actually, nobody knows even one word for sure that Jesus spoke. तो अगर हम इसकी तुलना करें क्रिश्चियनिटी से, जो उनकी रिटन लेगेसी है या मेमोरी लेगेसी है, तो आज के समय में किसी को नहीं पता कि एक भी शब्द कि वो वास्तव में जीसस क्राइस्ट ने ही बोला है। Because apparently the first of the Gospels, there are 4 Gospels, and then there are many others that were not taken as authoritative. But the first of them was written some 80 years after Jesus departed. तो उस संप्रदाय में वो कहता है जो 4 ग्रंथ हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, और इसके विस्तार में अलग अन्य ग्रंथ है जिनको उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता। तो जो उसमें सबसे पहला ग्रंथ है उसका लेखन तब हुआ जब जीसस क्राइस्ट के जाने के 80 साल बाद। Of course, and everyone recognizes this, the letters of Paul are earlier than that. I don't know how much earlier. They would be several years, maybe decades earlier, but still, it was all after Jesus.
और हर कोई इस बात को मानता है कि जो पॉल द्वारा लिखे गए पत्र हैं उससे पहले से हैं, जो पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ। कितना पहले है मैं अभी नहीं जानता। Yeah, so there's quite a difference. तो But as I said, it's a whole seminar, this discussion. जैसे मैंने कहा ये पूरा सत्र हो सकता है इस प्रश्न पर। But I think it's necessary that we make nice connections with all kinds of people of different faiths, different traditions. I think it is part of keeping our own tradition as a living tradition. परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि अन्य संप्रदायों से संबंध बना के रखना और अपने खुद के जो इस संप्रदाय को एक जीवित संप्रदाय के रूप में रखने के लिए ऐसा आवश्यक है। Because one of the dangers of any tradition is that if you hold too sort of absolutely to the literal word of that tradition, then there's a danger that it becomes frozen, it becomes ossified. क्योंकि हर धार्मिक संप्रदाय के साथ एक खतरा ये रहता है, अगर उसमें जो दिए गए शब्द हैं उनको अगर आप बिल्कुल पकड़ के उसी तरह से बहुत ही कट्टरवादी रूप में समझें तो इससे बहुत बड़ा खतरा मंडराता है संप्रदाय पर। So to be a बदलते परिवेश के साथ to be a living tradition, there has to be interaction in the world. It has to be like. एक जीवित संप्रदाय होने के लिए उसका एक मुख्य लक्षण है कि आदान प्रदान होना इस संसार के साथ। जीवी संप्रदाय होने के लिए। Okay, maybe we've given enough work for our translator Premanjana Prabhu today. So thank you all very much. It's been I'm so glad that I could spend a couple of days here with you. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे को ये अवसर मिला आप सबके संग का। ISKCON Punjabi Bagh ki जय। Srila Prabhupada ki Gaur Premanande. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj ki jai। So I would like to thank Maharaj and humbly request Maharaj to kindly keep bestowing his blessings in form of his association again and again at ISKCON Punjabi Bagh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.